वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल। आज हम देखेंगे रूम्स कैसे क्रिएट करते हैं Revit में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल आर्किटेक्चरल प्लान है। इसमें रूम्स क्रिएट करना है। तो रूम्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आर्किटेक्चरल प्लान में जाना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम्स एंड एरिया। रूम एंड एरिया टैब में जाने के बाद आपको रूम सेलेक्ट करना है और सिंपली RM शॉर्टकट कीज है, सो RM टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सिंपली स्पेस पे लेके जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम लिख कर आया सिंपली यहाँ पे जाना है, क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम्स क्रिएट हो रहा है। सिंपली इस बॉक्स में हम क्रिएट सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली रूम क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये रूम क्रिएट हो चुका है। इसको सिंपली आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके एडिट कर देना है। बेडरूम 1, बेडरूम 2, लिविंग रूम 1, लिविंग रूम 2, फिर यहाँ पे डाइनिंग रूम, देन आपका ये है एंट्रेंस। तो आप देख सकते हैं मैंने रूम क्रिएट कर लिया है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू डू द कलर फॉर दिस रूम्स and how to show this area of this room. So please don't forget to watch my next video and always try to watch the full video so that you can see all the contents inside the video. So thank you for watching.